लद्दाख से खूबसूरत है आज का रूप, ऐसा मुझे सांटियागो में क्रिश्चियन ने कहा था। फिर क्या था, इंडियन जाग गया हमारे अंदर का, हमको भी देखना था। This is epic. फटाफट नीचे पहुंचो। और डिसाइड किया विकुनिया चिले से एंडीज माउंटेन रेंज क्रॉस करने का। अकोमोडेशन प्री बुक फिर से नहीं किया ना बोले तो नजर सीता। हमको जाना है टूवर्ड्स अर्जेंटीना वाया द माउंटेन पास पासो दे आगुआ नेग्रा। और इस रूट के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता वो भी आप खुद ही देखिए। Just out of the blue, the border control came in. You see that behind me? That's the border control desks. Let's just get this done. Exit from Chile. But you know what's funny? The border for Argentina is 140 kilometers from here. Not the border, but the office control, the immigration and customs control office in Argentina is 140 from here. And the actual border between Argentina and Chile is around 80 kilometers. And then I think 60 kilometers inside, then there will be the immigration and control office and customs office. And today we left on time as well, around 8:45. Again, Indian Standard Time, 1 hour late. Fin de paviamento. That means off-road. कभी कभी लगता है I'm the master of flying drone at the wrong places. How cool would have been here. But anyways. I wanna go somewhere far away. I wanna go where they don't know my name. Get out of town, 'cause I can't take no more. Yes? Okay. Are these gauchos? Gauchos are the people who have horses, like cowboys version of Chile, I think. This old town, it's got nothing left for me. All I've got are these broken memories. This new road, I've finally broken free. भाई साहब, कोई तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, and this is a bad one and they just abandoned the car from here. Look at the glass sheet. Wow, this was a bad one. Wow, I don't know what to call it. It's like buttery, smooth and multicolored, and like sRGB palette is here, right here. Maybe YMCK as well. Wow, how ridiculously beautiful. Ooh. I'm getting restless, waiting for my day to come. I'm lost for words. I've been talking about leaving for way too long. The only thing left to do is pack up my bag and run. Ladies and gentlemen, welcome to Paso Agua Negra, which is the border of Argentina and Chile. Behind me is Chile,
And in front of me is Argentina. Can you read that? Republica Argentina. I think we are more than 4,000 meters above sea level. No, 4,814 to be precise. Pretty high. And I could feel the oxygen levels are low and I'm a little bit panting while talking. Mountains are not brown. They are of course brown, but they are red, magenta, purple, yellow. Like the one in front of me is deep red on the top and then goes to maroon and brown at the bottom. The glaciers over there and you're... Arre nahi bhaiya, giro mat. Take 2. I'm feeling a bit dizzy. Let's get down. Those glaciers are gobsmackingly beautiful, like you're standing at their level, eye to eye. Eye to eye. If you know what I mean. But oh, this is epic. How did I save this? I don't know. How did I save this? Fucking hell. फटाफट नीचे पहुंचो, फटाफट. कभी कभी सपने जैसा लग रहा था ये. क्या वाकई में ऐसा लैंडस्केप एग्जिस्ट करता है? तेज़ चलाने का तो मन ही नहीं था. ऐसा लग रहा था जैसे बाइक नहीं अलादीन के कालीन पे बैठे हैं और भाड़ में गई जैस्मीन. लद्दाख में लेह और कारगिल के बीच में एक बड़ी मशहूर जगह आती है. अर्जेंटीना नॉर्थ का कुछ हिस्सा वैसा ही दिखता है और उसकी शुरुआत बस होने ही वाली थी. देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, और जब लेता है ना वो भी छप्पर फाड़ के ही लेता है. तो कल मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क करी थी. सोचा कि लास्ट फ्लोरेज है, अब तो नॉर्थ में आ रहे हैं, बारिश कम होगी. देखो क्या हुआ है. नॉर्मली आई विल टेक दिस आउट एंड पुट द कवर. दिस कवर कहाँ गया यार? आओ ना. दिस ढक्कन और कैप ऑन टॉप ऑफ इट. कल रात नहीं किया. And this has happened to me before at home as well. And once I was riding in the rain and water went inside the USB charger and messed it up. Moment of truth. I'll charge my phone. Wireless charger is fine because इसका connection batteries है directly inside the bike. So this is okay, but ये बहुत slow charge करता है. एक नाटक और हो गया. कल शाम को मैंने अपने कपड़े और जूते धूप में रख दिए थे ताकि बदबू निकल जाए, थोड़ी सी फ्रेश हो जाए. मगर ये पूरी तरीके से सोक्ड अप है तुम्हारी. लकीली आज का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 200 किलोमीटर है. तो मुझे अपनी ट्रैकिंग पैंट्स निकाल करके राइड करना पड़ेगा और जूते और इसको पीछे बाइक पर बंजी कॉर्ड्स में लगा करके हिप्पी बन के जाना पड़ेगा आज. लामायुरू सुना है? द फेमस मून लैंड ऑफ लद्दाख. लास फ्लोरेस एक बहुत छोटा सा गांव है अर्जेंटीना बॉर्डर पर, और बस 10 मिनट दूर जैसे उसके आंगन में उस मून लैंड का सीना चीर कर एक नदी ने अपना कैनियन बनाया है.
जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है। हमको क्या पता था लांस नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी फीलिंग आ जाएगी। Distant dreams, clear horizon, open seas. Why can't we please? I know why this world's alone. Mistakes that we've made have burned this home. It's kind of a oval shape of valley where the river is just going through serpentine way. You can clearly see that this is also a round shape around it, and on the other side also there is a round shape. God, this place. आइए आपको बताते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। पासो आगवा नीग्रा से हम लास फ्लोरेस आए जो सान हुआन प्रोविंस में है। अगली मंजिल है विया यूनियो इन द प्रोविंस ला रियोशा। और अब ये कहना बेकार ही है कि रास्ता सुंदर है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं ये वाली पैंट पहन के लगा था, मम्मी ने दही अंडा लेने के लिए भेज दिया और हमने बाइक लगा करके निकल लिया हूँ। चलते हैं, मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है। Pray for our redemption, to heal our troubled ways, blinded by perception. Is there no other? Is there no other way? I pray for our redemption. आप जब कहीं किसी घर में रुकते हैं तो उससे एक रिश्ता बन जाता है। वो जगह कम अनजान हो जाती है। कुछ घर जैसे सांटियागो में कासामाते अपनी कहानी कहते हैं, और कुछ आपकी। ननिहाल ददिहाल जैसे घर जहाँ से परिंदों को उड़ना ही पड़ता है कहीं और घोंसला बनाने के लिए। टंग जाती हैं दीवारों पर यादें, या पीछे रह जाता है कोठरी में बचपन। अंगीठी में आग नहीं जलती, तार पे कपड़े कुछ कम सूखते हैं। कुर्सियाँ अब चरमराती नहीं, और चारपाई अब नायलॉन की है, बान की नहीं। बत्ती जाने पर कुप्पियाँ नहीं जलती, टीन का शेड हो या छत पर, धूप तो रुकती है, जलन नहीं। आंगन में उजाला तो है, ठंडक नहीं। कुछ ऐसा ही ननिहाल था मेरा, जहाँ अब मैं कभी जाऊँ मेरा मन नहीं। बाकी किस्सा कोई अगली बार। एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ जाकर लगता है कि अब तक क्यों नहीं आए थे यहाँ, जहाँ पहुँचकर जिंदा होने का एहसास और क्षणभंगुर जिंदगी के ख़त्म हो जाने का डर एक ही पल में होता है। मिलता हूँ।